So good afternoon to all who have joined. Now, as you keep joining and those who have joined, I've just told you, I want the chat box full of anything that your children resent about you, know that your children resent about you. And कोई rules हैं ऐसे जो वो आपको पता है कि वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है. And otherwise also they just don't like certain things about you and you are aware of it from the parents' point of view. I'll tell you the children's point of view and let's see where we match. You know, you'll be surprised at some of the children's responses. Saying when I tell them to work in the kitchen, they don't like. Some people are saying, asking him to study, he doesn't like. When I don't give time, he doesn't like. When I punish, he doesn't like. Like when I slap him, he doesn't like. Who would like to be slapped? Adults, they could probably look back on their childhoods and see what you resented in your parents, what they did that you did not like at all. Though this generation is more critical, we were not very critical of our parents. From your chat messages, I don't see much, and I really think that you feel that your children just adore whatever you do to them. There is a very good a poet, author, I don't know how many of you have read him. He's Khalil Gibran. And he says a very nice thing which I'll read out to you. Your children are not your children. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. You may strive to be like them, but seek not to make them like you, for life goes not backwards, nor tarries with yesterday. Now, it's a deep, deep thought. This author actually is saying कि आपके बच्चे ठीक है आपकी बॉडी के थ्रू या आपके थ्रू आते हैं, पर वो आपकी बिलोंगिंग नहीं है. आप उनको प्यार दे सकते हैं, आप उनको अपने थॉट्स नहीं दे सकते, क्योंकि उनके थॉट्स उनके अपने हैं और उनकी जो सोल है वो कल में बसती है, जो आप देख भी नहीं सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उनका कल क्या होगा. तो कभी भी लाइफ पीछे नहीं जाती है, लाइफ हमेशा आगे ही जाती है. So as parents we need to understand this, and in this context we are speaking about some things that children resent. Now, why did I think of this topic? There was a class 10 assignment where the class teacher gave them some a fun thing which they had to do, and बच्चों को ये लिखना था कि उनको क्या रूल्स उनके घरों में बताए जाते हैं. उनको ये लिखने को दिया गया. Of course it was a humorous thing. बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा और छोटी छोटी बातें अपनी मन की लिखी, और उसमें उन्होंने बहुत ह्यूमरस टाइप भी लिखा कि मम्मी कैसे इरिटेट करती है, क्यों ऐसा होना चाहिए. बट उससे मुझे एक थॉट आया कि एज पेरेंट्स कई बार हम सोचते ही नहीं है कि हमारे बारे में बच्चे क्या सोचते हैं. वी आर सो इन्वॉल्व इन आवर ओन बीइंग कि हम अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, उनको कैसा बनना चाहिए, हम उनको कैसे बनाना चाहते हैं. So that is why I thought I would take up this topic in Jams today. Now, surprisingly, ज़्यादातर के almost 95% बच्चों ने जो बोल रहे थे कि ये रूल्स हमारे पेरेंट्स देते हैं, बहुत अप्रिशिएट किया था. बिकॉज आपके रूल्स में आपकी केयरिंग दिखती है, उनको दिखता है कि आप उनके लिए केयर करते हैं, इसलिए उनके लिए ये रूल्स बना रहे हैं. So broadly, I have divided the rules that you put on them into a few categories. First is safety rules. Now, some rules in the house are non-negotiable. उसमें बच्चों को पसंद है या नहीं है, वो तो होते ही हैं. You have, and children also, like some of you have said कि उसको कुछ करना अच्छा नहीं लगता. शायद आप उसको साइकिल जब रोड पे चलाने तो बोलते हैं, मना करते हैं, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. लेकिन अदरवाइज वो अप्रिशिएट करता है बच्चा कि ये जो रूल है मेरे भले के लिए है. सो ऐसे वाले रूल्स जो है बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट किए
और बोला कि हाँ ये मेरी मम्मी कहती है, मुश्किल होता है, but it is for my good, and they understand that. So some safety rules are non-negotiable. Health rules, again non-negotiable, and they understand. Morality rules, जहाँ पे morality rules आती है, वहां पे सोसाइटी के चेंज होने से हमारी मॉरल वैल्यूज जो हैं वो बहुत चेंज हुई हैं. So we will talk about that. Social rules, again society has evolved, parents have not evolved so much, बच्चे बहुत आगे निकल गए, तो वहाँ कई रूल्स ऐसे हैं वो रिजेंट करते हैं. डिसिप्लिन रूल्स, अगेन दे रिजेंट सम ऑफ देम, बट दे अंडरस्टैंड कि उनके अच्छे के लिए हैं, तो बहुत ज्यादा रिजेंट नहीं करते. So these are the few categories of rules that we will be talking about. Now safety rules में बच्चों ने क्या बताया कि मम्मी बोलती है और फादर बोलते हैं कि कोविड प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, which is very good and they all agree with it कि लेनी चाहिए, उसमें वो रिजेंट नहीं करते हैं. Staying out late with friends, उस टाइम उनको शायद बुरा लगता हो, but overall they realize it is for their safety. So by and large वो रिजेंट, अच्छा मतलब जहां पर भी हाउसहोल्ड जो है वो नॉर्मल हैप्पी वार्म हाउसहोल्ड्स हैं, वहां पे even staying out late with friends is not resented. Children know that it is for their good. हाँ वहां पर जहां पर इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं घरों में, जहां पर घर में उनका कोई कनेक्शन नहीं है, उनको बहुत रिजेंटमेंट होता है, बिकॉज फ्रेंड्स जो हैं वो उनके दिल के करीब है, सो उनको वहीं पे ही कोई ना कोई सपोर्ट मिलता है. सो देन दे स्टार्ट रिजेंटिंग. सो इफ योर चाइल्ड इज रियली रिजेंटिंग his friends time, question yourself a bit कि क्यों उसको, मतलब फ्रेंड्स सबके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, पर पेरेंट्स से ज्यादा, घर से ज्यादा जब उसे फ्रेंड्स की फिक्र होने लगे तो थोड़ा सा उसको क्वेश्चन कीजिए. देन सिंपल थिंग्स लाइक व्हीकल नहीं चलाना, स्कूटर नहीं चलाना, रात को नहीं चलाना, बाइसिकल रोड पर नहीं चलाने, अकेले कहीं आना जाना नहीं है till at least a certain age. They are quite okay with it. They don't feel that there's anything wrong. एक छोटी छोटी क्रिब होती है बच्चों की रिजेंटमेंट की, which is not really resentment. जैसे हस्बैंड वाइफ की भी शिकायतें छोटी छोटी रहेंगी, जहां आप एक दूसरे को टीज करते हैं, आप शिकायत करते रहते हैं, बट इनसाइड यू नो दैट यू केयर एंड यू लव ईच अदर. इसी तरह पेरेंट्स जो बच्चों के हैं, they may tell you that why do you stop me, I don't want to, I want to go with my friends for a party, but inside they realize it's their own good, and when they write about it, when they think about it, they're all appreciative of the fact. Then mothers have a lot of health rules. Some of them, when they become nagging, they start resenting. All the time getting after the child, ye khao ya nahi khao, uske piche bhagte rehna, thoda sa resentment hai, but by and large, children understand that their health rules, they have to be obeyed and they should be obeyed. Like not watching TV, too much TV. Mobile zyada use nahi karna hai. Clean up your room. When you tell them that some child writes that clean up my room, my mother keeps getting after me. Why? It's my room. Who's going to look at it? Especially in pandemic time. So you see, these are very small affectionate resentments. These are not serious resentments. But children have written like that, which is very nice. Then some health rules like exercise every day. When you keep getting after them, they resent it, but yet they know it's for their good. Eating at a specific time, eating together, eating healthy food. So all this till it becomes nagging. तब तक बच्चों को बिल्कुल उससे कोई problem नहीं है. Waking up early. Some children have said that, my mother tells me to have a bath every day. So, then they made a cartoon and they say, well, I mean, I don't like it, but karna padta hai, that kind of thing. Sit straight, posture improve karo. These are very small things which children appreciate being told. Then play, one child writes, my mother is always telling me, play in the open air instead of just sitting inside the house like a hen. So, these are very affectionate, small things that children have written. Do not play in the rain, play safely. Don't play games like PUBG or, whatever whale games, they're addictive. Now comes some social rules. Social rules में children have evolved. उनका जो social rules है वो हमारे से change हो गया है. अगर हम इनको बहुत मना करते हैं कि जैसे हम लोगों को
मना किया जाता था ऑपोजिट सेक्स के बच्चों के साथ बहुत ज्यादा मिलना जुलना, अभी बच्चे वो रिजेंट करते हैं. They, for them, it is not a gender issue at all because they're studying in co-ed schools and we are encouraging them to mix around with others. As long as there's friendship, we are not objecting to it. So some children do resent this thing of इस जमाने में, then they feel that parents are outdated. इस जमाने में लड़कों के साथ नहीं करो, लड़कियों के साथ नहीं खेलो, not acceptable. Now girls, when they write wearing revealing clothes, now to us what is revealing is not revealing to them. So such rules they really resent because they do not think of it as dirty, as revealing, like we used to think about it. So parents who have daughters, just be a little careful because these are things that girls have started resenting now. Now, parents often tell children, don't be a loner, be a happy person. Now, this is a nature of a child. Some things you can change, some things you cannot. So, these are again, when you put it down as a rule. अब बच्चा लोनर अगर उसको अकेले रहने में आता है तो by your rule is we will not become gregarious. You have to take an effort कि वो बच्चा socialize करे, find other means. You cannot say कि आप अकेले मत बैठो और friends के साथ जाओ. So these kind of imposing things is what children resent. And a thing that, I think children after 5th, 6th start resenting is judgmental होना. Now this is a term जो हमारे टाइम में तो थी भी नहीं, हमको पता ही नहीं था कि judgmental होना क्या होता है. But now children are very aware of being judged. They don't like to be judged. Now, certain social rules become difficult because of joint families. अब जो बच्चे हैं वो interact करते हैं with children from various backgrounds. तो उनको लगता है हमारे को इतनी restrictions हैं, हमको हर एक का सुनना पड़ता है. और यहाँ पर ये बच्चे हैं जो न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं इतना करना पड़ता. लेकिन of course there are 101 advantages of a joint family. So this is up to you कि उनको इस चीज से कैसे adjust करवाएं कि अगर प्लसेस होते हैं माइनसेस होते हैं, दोनों होते हैं. So which ones are more in a joint family? If you feel that pluses are more, that should be explained to them so that they don't resent the minuses. They're not allowed to watch movies, plus 18 movies. Now plus 18 movies, we are again going to a stage where plus 18 पे maturity आती थी. आजकल तो बच्चों को 12 पे ही आ जाती है. So what we were hiding from those children at 12, वो अब hidden रहा ही नहीं है. So इसलिए क्योंकि उनको तो सब पता है, उनको लगता है छुपा क्यों रहे हैं, तो हमें सब पता ही है. So that is where the resentment comes in. Now certain morality rules which all of us say, don't lie to anybody, honesty, integrity, be polite to others, respect your elders. Now ये सब चीजें उनको बिल्कुल बुरी नहीं लगती हैं, but उनको बुरा तब लगता है जब वो देखते हैं कि यही चीजें आप नहीं कर रहे. Now simple morality rules, do not lie to anyone. जब आप उनको उसको बोलते हो और वो आपको झूठ बोलते हुए देखता है, इमीडिएटली उसकी रिजेंटमेंट वहां बढ़ती है. उसकी रिजेंटमेंट बिल्कुल भी आपके इस रूल से नहीं है. उसकी रिजेंटमेंट सिर्फ इसलिए है कि you do not walk the talk, you do not do what you preach. Respect your elders. ना जिन घरों में थोड़ी फ्रिक्शन है, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ की नहीं बनती है और डॉटर इन लॉ अपनी मदर इन लॉ का डिसरिस्पेक्ट कर रही है, वो देख रहा है एवरी टाइम कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, बट माय मदर इज नॉट रिस्पेक्टिंग माय दादी. वो वापस मुड़ के जवाब दे रही है. वो कैसे सीखेगा कि मैं नहीं जवाब दूंगा? हाउ कैन यू ही नॉट रिजेंट इट? सो बीइंग पोलाइट टू अदर्स, you go and fight with your neighbor, you go and fight with the teacher, you get angry and you use words which should not be used, and then you tell the child, be polite to people. वो immediately sense करता है कि ये तो बिल्कुल मेरे काम की बात नहीं है. Why am I being told this? Honesty is one thing we teach all our children. Then अगर हम इतना ही सिखा रहे हैं, हमारा इंडिया में इतनी डिसऑनेस्टी क्यों है? ये हम कहाँ की जनरेशन पैदा कर रहे हैं जो इतनी डिसऑनेस्ट है?
So there's something wrong. We are not doing what the child is being taught. वो कहीं ना कहीं आप में घर में डिसऑनेस्टी देखता है. कोई भी अकाउंटेबिलिटी, जो आप चीजें शैम करते हो, तो किसी को आपने पैसे देने हैं, पैसे नहीं दिए हैं, वो आपसे रोज आके मांग रहा है, उसके हक के पैसे हैं, बच्चा ये सब देख रहा है, और उसके बाद आप उसको सिखाते हो अकाउंटेबिलिटी. Will he not resent it? A child is a very pure, clean slate. उसको ये सब नहीं मालूम है, उसको वही मालूम है जो वो अपनी एनवायरमेंट में देख रहा है. एंड दिस इज व्हाई वी आर प्रोड्यूसिंग दिस जनरेशन जो डिसइल्यूजन हो जाती है. वो बच्चे जो हैं बहुत ऑनेस्ट हैं, सब कुछ जो आइडियल है, बिकॉज दे डोंट नो डिसऑनेस्टी. लेकिन हम धीरे धीरे उसके जो एनवायरमेंट है उसको पोल्यूट करके इन चीजों से उसको ये सब हम सिखा देते हैं. Now, some things that children wrote, I will read out for you, and I think you can look inside and see whether you do it or not. Some or the other person is always standing on my head and asking me to do or fix something. That means so much of monitoring. When a child, sees कि हमेशा मेरे ऊपर कोई ना कोई लगा है, he feels claustrophobic. He feels कि अब मुझे जीने देंगे कि नहीं. एक एक्सप्रेशन आजकल बहुत चला है, बच्चे की जान लोगे क्या. So this expression from some movie must have come, that this expression has come with overbearing parents. आजकल एक term है which I think was mentioned in some other session also, helicopter parenting. Parents are becoming helicopter parents. हमेशा सिर पे मंडराते रहते हैं, हमेशा ही देखते रहते हैं कहाँ क्या जा रहा है. So इससे ऊपर मंडराने की बजाय अगर वो एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट ही है, तो सिर्फ ऊपर आपको मंडराने की जरूरत नहीं है. उसका पूरा एनवायरनमेंट उस बबल में ही वो है जहां सब अच्छी बातें हो रही हैं. So he will imbibe. So this is one thing that children really resent, कि पूरा टाइम मेरे ऊपर कोई ना कोई मॉनिटरिंग चलती रहती है. Now another child writes, my parents act and think as if they know every detail about me and my life. This often causes me to be secretive in order to shelter myself from being an open book. That is invading a child's privacy. बच्चा कितना भी छोटा हो, उसको अपने प्राइवेट मोमेंट्स चाहिए. इवन एक 2-3 साल का बच्चा, उसको कुछ मोमेंट्स ऐसे चाहिए जब अपने खिलौनों के साथ वो खुद खेल रहा हो और उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे. और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी ये नीड ग्रेटर होती जाती है to have his or her own privacy. If you want your child to tell you something, be patient, wait. वो बताएगा अपने टाइम में. But getting after him, अच्छा बताओ क्या हुआ, आज क्या हुआ, क्यों हुआ, so that makes the child secret. They feel कि मेरे भी कोई, मतलब मेरी अपनी भी कोई लाइफ है, तो मुझे अपना भी कुछ होना चाहिए. So just like us, they also need privacy and respect. Also, a child writes, not allowed to express my opinion or justify why I feel that some practice or belief is wrong. अपने विचार हमेशा अपने बच्चों के ऊपर थोपते हैं, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं. So that is why you cannot just say, shut them up and say, you're back answering. No, you have to justify why they are wrong. Now, another child writes that just because I'm a bit forgetful and clumsy, they take a lot of time over doing things. They give me strange looks and question me about everything. अब बच्चे ने एक गलती करी है, उसको आपने देख लिया कि गलती करी, उसके बाद आप उसे कभी ट्रस्ट ही ना करें. And before the child does anything, you believe कि वो तो बच्चा wrong ही होगा. So this is what children really, really resent. They feel that trust is a major factor that the parents should have in the children. So even to a point where you know कि शायद पता नहीं ये मेरा ट्रस्ट रखेगा कि नहीं रखेगा, trust the child. उसको गलती करने दो, उसको गलती से सीखने दो. So these are, very, very important things that parents need to, self-analyze, where a child's privacy must be honored and respect for the child.
Now, some of the parents, they give us such ridiculous rules. One child writes, my mother tells me, don't sleep with your mouth open. When I'm sleeping, how do I know when my mouth is open? So when you lay down some rules, so common sense logic apply कीजिए. Like if he knew कि अगर वो सो ही गया है, उसको मालूम नहीं है तो उसका माउथ ओपन है, वो कैसे शट करेगा? So these kind of ridiculous. See how I was very amused that children are very perceptive. ये कोई बात हुई? Then they say कि my mother tells me choose good company. अरे जब मैं अपनी फ्रेंड को चूज कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो वो गुड ही होगा ना, मेरे लिए वो बैड होगा तो मैं क्यों चूज करूंगा? Then parents always say don't make your own decisions, you're not grown up enough. On the other side they want the child to be independent. Say be independent, you are grown up. अब दोनों में से आप एक चीज तो डिसाइड कर लीजिए कि whether you think I'm grown up or whether you think I'm not. Then parents say I know you very well. If you know me very well, why do you ask me to tell me everything that I know? You insist, you must tell me everything because I'm your mother. And then you say, I know you very well. So दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? Now, again, like I told you, and another thing we tell them, you tell me what you think. You must talk to me. You must, tell me why you think. You must question. सब करते हैं. उसके बाद don't answer back. Now, if I'm telling a child something, और वो चुपचाप yes mama बोलता है, तो I'm very happy. But I want my child to be curious. So these kind of contradictory things, they confuse the children and say, या ये बोलो या ये बोलो. And now children are getting very logical. You see, हम लोग उनको SOF दिलवाते हैं, Olympiad. We make them sit through all these tests to increase their logical reasoning and thinking. And then we tell them, जहाँ तक relationships का concern है, आप logical मत हो. Just do it because I am your mother. So when we make statements like that, we don't justify what we are telling them to do. The child is confused. And he cannot tell you, okay, Mama, now tell me. What do you want? This or that. So because वो तो back answering हो जाएगा. So वो चुप रह जाता है. जब बच्चा चुप रह जाता है तो अंदर अपने सोचता है कि, why are my parents doing all this? So that is where the resentment starts. Now, some children feel that their parents push their culture on them. Now, culture is changing and we insist on certain things, which some children do resent it. And they feel that उनका बाहर एक modern image जो बनाना चाहते हैं, वो उनका घर में जो traditional आप बनाना चाहते हैं, उससे clash करता है. So, anything that you want to imbibe in the child of Indian culture, of your culture, your family culture, should be done with some kind of reasoning so that the child actually values it. He can proudly go out and say, hey, listen, what I'm doing is correct. He shouldn't feel ashamed of it. Because when he does it without a reason, then outside, there's certain restrictions. Like sometimes I find that children are told not to, say, enter some worshipping places. Children are told not to do something against their religion, but other religions resent it. So these kind of things either should be very nicely explained to children. Because for them, there is no religion, no caste, no creed. Unless you put it in their minds. और जब वो बाहर जाते हैं छोटेपन में तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब वो थोड़े से बड़े होते हैं तो पीयर प्रेशर बहुत होता है. तो उसमें उनको ये चीजें जस्टिफाई करनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि उनको भी जस्टिफिकेशन नहीं मालूम है. So they only are doing it because their parents will get after them if they don't. So या तो वो आपसे छुपाने लगेंगे और या रिबेल करके उससे बाहर निकल जाएंगे. Simple things like जब इंटरकास्ट मैरिजेस आपके घरों में अलाउड नहीं है, बच्चा बड़ा होके आपके घरों से इंटरकास्ट मैरिज क्यों करता है? क्योंकि he does not understand आपका लॉजिक क्या है. वो अपने जब ग्रुप में जाता है, अपनी सोसाइटी में जाता है, तो he feels that he is being bogged down by your very traditional and conservative values. So या तो आप अपने आप को उसके जिंदगी और उसके माहौल में डाल लीजिए, और अगर आप नहीं डाल सकते हैं, आपको लगता है कि हमारी फैमिली वैल्यूज इतनी ज्यादा हुई है, तो उससे कुछ लॉजिक, कुछ रीजनिंग से एक्सप्लेन करवा के कन्विंस करवाइए. Otherwise,
it is always going to, you're going to land up in rebellion or resentment. So जब अल्टीमेटली बच्चा एडल्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली देन द चाइल्ड रिबेल्स, बट जब तक वो एडल्ट नहीं होता वो आपके अंडर है, और जब तक आपके अंडर है, आपसे एग्री माइंड से नहीं कर रहा है, तो जब नहीं कर रहा है तो वो रिजेंटमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है. सो दिस डज नॉट वर्क बिकॉज इन आवर फैमिली नहीं होता है, बिकॉज इन आवर रिलीजन नहीं होता है, because I'm your mother or father. These are no reasons for modern children now. So that is why this is what they resent. Another very major thing they resent is comparison, whether भाई बहन से या friend से, often friends से. देखो तुम्हारा friend, हम teachers भी as a teacher भी हम करते हैं. Look at that person, if he can do it, why can't you? So when they read, and children are reading all the books that we read and all the TV that we are seeing. These parenting things that I'm telling you, in some form or the other, ये किसी TV program में not as a talk, but as a dramatic thing आती है, बच्चे ये सब सुन रहे हैं. So when they're hearing कि ये चीज होनी चाहिए, ये comparison नहीं होना चाहिए, इतनी बार serials में या movies में ये कितनी बार ये feed in किया जाता है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, आपके बच्चे different हो सकते हैं. Now the child knows, yeah, I can be different. And then you're comparing that and you're saying कि आपका भाई तो ऐसा है, आप उसके जैसे क्यों नहीं हो. Now, a lot of children say, my parents want me to become a carbon copy of them. Now, which is kahin subconsciously, it's true that all of us live by our own lives. And just tarah hum, okay, I remember that initially I was very harsh to my daughter only because I felt, मतलब it was my ego कि मेरी बेटी मैथ्स में क्यों नहीं अच्छी, मेरी बेटी क्यों नहीं अच्छी. Okay, somebody's got a very nice cup here. It's all very nice, but can we finish this and then see that? So, these are the things that they resent. Then emotional blackmail. रोना धोना शुरू, and just to please you he has to bend to your wishes. So अंदर से वो बहुत resent करते हैं. And then a lot of them say that parents disrespect them even though it's unintentional. उनका मतलब नहीं होता है, but उनको उनके friends के सामने या otherwise उनकी opinion ना लेना, उनको riff-raff treat करना कि इसको तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है. So this really hurts them and they resent it. And not allowing them to live their dreams, which I have also seen because we have senior students. बच्चा जो है वो कौन सी स्ट्रीम लेना चाहता है, पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है. अगर डॉक्टर है तो मेरा क्लिनिक मेरे बाद कौन देखेगा, इसलिए उसको डॉक्टर ही बनाना है. बिजनेसमैन है तो मेरा बिजनेस मेरे बाद कौन देखेगा, इसलिए उसको उस बिजनेस में ही डालना है. So these kind of things can be very, very burdensome to children. And this is where the quote that I read out to you in the beginning, that comes through. कि आपने जो भी किया है, चाहे आपने एक बड़ा घर बनाया, lot of parents get very agitated कि हमने इतनी प्रॉपर्टी बनाई और ये जो है ये बाहर अब्रॉड जाना चाहता है. अरे आपने प्रॉपर्टी उसके लिए क्यों बनाई? Did he tell you कि मेरे लिए प्रॉपर्टी बनाओ? You made it for your pleasure. So जो भी आप कर रहे हैं, it is for your life. Do not expect children to fulfill your dreams, your wishes. If you could not, भरतनाट्यम डांसर एक लेडी है, आप देखते होंगे सुपर डांसर्स में भी ना, उसकी पूरी जिंदगी की एम्बिशन थी कि वो स्टेज पे बहुत बड़ी डांसर बने, नहीं बन सकी. तो now she gets after the child कि तुम बनो. Sometimes children do it, but very often they don't. They resent it. अगर बच्चा नहीं बनना चाहता, आप उसको जबरदस्ती क्यों बना रहे हो? Heroines, a lot of heroines, they crave that their mothers had this dream of becoming a heroine. तो वो नहीं बन सकी तो मुझे बना दिया. So this kind of attitude really hurts them. Then breaking a promise. Never promise a child something that you cannot fulfill, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा हर्ट करता है और बहुत ज्यादा उसको रिबेलियन के थ्रू ले जाता है. बिकॉज ही फील्स कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है मम्मी, उसके बाद आपको ट्रस्ट नहीं करेगा. जो आप कहते हो वो आप करते तो वो नहीं कभी.
So don't make false promises that okay, I will buy you a cycle when you come first and you know कि आप नहीं खरीद सकते. Then never ending advices. This I think came on the chat box from somebody. Somebody said कि you know my child really resents कि हमेशा advice ये करो ये नहीं करो. So जहाँ भी है check करो and let's do it. Why don't you do it? Give children choice. Why don't you think of doing this? And if he says no, take it. I don't want to think about doing this. Okay. Don't carry on. नहीं नहीं आपको करके देखना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए. So that means वो choice नहीं है, वो आपकी imposition ही है. वो आपका सिर्फ sentence choice वाला था. But give the child a lot of choices so that he or she can select कि ये मैंने करना है और मैं इसके लिए comfortable हूँ. Also, a lot of children don't like parents bragging about their past. हम जब बच्चे थे हम तो कभी नहीं ऐसे करते थे. एक्चुअली जब उनका बचपन जाके देखो तो सभी वैसे ही करते थे. हमें तो कभी मार नहीं पड़ी. हम तो इतना पेरेंट्स का कहना मानते थे, इतने रिस्पेक्टफुल थे. हम तो हमेशा फर्स्ट आते थे. कभी रिपोर्ट कार्ड आपका दिख जाए आपके पेरेंट्स आपके बच्चों को तो बहुत ही बेइज्जती होगी. Like I'll again tell you a personal incident. You know, in our graduation we had a subject child psychology. And I got very good marks in it. So when I was bringing up my daughter, when she was in the 7th, 8th, so I thought I was a very good parent and मैं तो बिल्कुल मतलब ideal parent थी. So one day she was going through my things and she found my certificates. And she did not notice कि मतलब मैं पढ़ाई में कितनी अच्छी थी और क्या, कुछ नहीं उसने notice किया. मेरे को she comes and says, Mama, I can't believe you've actually studied child psychology. And who gave you these marks? You know nothing about child psychology. So, you see, if I was bragging to her that I studied child psychology, I'm the best parent. तो ये तो बहुत ही खराब बात थी कि उसने मुझे इस तरह का कमेंट किया जो मुझे अभी तक याद है. Because it really hurt me that, this is what she thinks of me as a parent. She thinks that I do not know any child psychology, even though I've read it. It's a subject with me. So this is how children think. So do not keep on and on with, I did this, I did this. Someday the children are going to find out. Now, again, hypocrisy is something that children cannot stand. And hypocrisy is what I always talk about. And I talked about earlier also, that when they see you doing anything that you preach and you don't do, this is absolutely not acceptable to children, and they will lose respect for you there and then. And once they lose respect for you as a parent, कि आप वो नहीं करते जो आप preach करते हो, उसके बाद उनसे कुछ भी मनवाना बहुत मुश्किल. So that is why it's very important to, at least now, if you cannot change your lifestyle, at least don't preach. At least don't tell the child कि अच्छा honest होना चाहिए जब आप रोज dishonest हो रहे हैं. At least don't tell the child कि झूठ नहीं बोलना चाहिए अगर आप झूठ बोल रहे हैं. Let him learn by environment. वो उतना ही सीखेगा जितना आप आपके आसपास देखेगा. So what can we do when we see कि बच्चे हमारी इतनी चीजें resent कर रहे हैं? What can we do? One, we can be very, very understanding. कोई भी चीज आप नोटिस करें, don't say, think over it कि बच्चों के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या सोचती या सोचता. Then you can understand his position by being in his shoes. Secondly, give them space. थोड़ी उसको breathing space दीजिए. उसको उसके सिर पे हमेशा नहीं बैठिए कि do this, do that, nagging मत कीजिए. Walk the talk. जो आप कहें वो जरूर करें. Acceptance. Accept the child for whatever he or she is. That does not mean कि आप उसे correct नहीं करें. Acceptance does not mean जो मर्जी उसको करने दें. Acceptance means आपकी expectations उससे उतनी ही रखिए जितनी वो कर सकता है. अगर आप उससे expect करेंगे कि ये suddenly एक बड़ा football player बन जाए just because he kicks a ball, it's unrealistic. So इसलिए छोटी expectations रखिए ताकि you don't get disappointed. आप disappointed नहीं होंगे तो आप उसको हमेशा अच्छा कहेंगे. जब आप उसे encourage करेंगे तो वो और अच्छा करेगा. लेकिन अगर आपकी expectations एक बहुत high level पर है
और उससे वो मीट नहीं करता है, तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, वो हमेशा उसको लगेगा मैं तो कभी अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस मीट ही नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। देन ट्रस्ट योर चिल्ड्रन, जितना भी हो सके, जहां तक हो सके। ट्रस्ट डज नॉट मीन ब्लाइंड ट्रस्ट। लॉट ऑफ पेरेंट्स कम टू मी, मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता है, दैट इज ब्लाइंड ट्रस्ट। इट ट्रस्ट मीन्स कि ट्रस्ट हिम टू टेक डिसीजंस, बट जहां भी आपको लगे कि कुछ ऐसा हुआ है जो आप सोचते हो आपका बच्चा नहीं कर सकता है, find out first. Do not be blind. And again, always remember that children come through you, but they are not your property. You cannot do whatever you please with them. You have to treat them as, not as, even if you don't treat them as adults, but as individuals. They have a separate mind of their own. उनका अलग दिमाग है, दिल है, उनकी अलग सोल है. So उसको अपने में merge मत कीजिए. So these are some of the things that you can do to have a healthy parent-child relationship.